Hello students. You are watching Asan Public School. And I am your teacher Muhammad Asan Khan. So today we gonna talk about English of class 9th. Chapter number 5. Health problems caused by mosquitoes. So let's begin. Doctor tell you about the disease. Malaria, dengue, and chikungunya, all three diseases spread by mosquitoes. The symptoms of these diseases are so similar that it can be quite difficult to identify them for sure without laboratory testing. But it is important to find out what the exact disease is for it to be properly treated. Let us try and understand something about the cause, signs and symptoms, similarities and differences, and the prevention of the disease. मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया तीनों बीमारियां मच्छरों से फैलती हैं। उन बीमारियों की इलामात इतनी मिलती जुलती हैं कि लेबॉरेटरी टेस्ट के बगैर यकीनी तौर पर उनकी शनाख्त करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन उसका सही इलाज करने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि सही बीमारी क्या है। आइए वजह की इलामात, मुमासलत और फ़र्क, और बीमारी से बचाव के बारे में कुछ समझने की कोशिश करें। Malaria causes. Malaria is caused by Plasmodium, a single-celled parasite often transmitted by infected mosquitoes. It is injected into a person's circulatory system through the saliva of the mosquito. The parasite infects the red blood cells until they burst. Then, the newly developed plasmodium from the burst red blood cells spread and infects more red blood cells through the body, thus killing all the cells. This can lead to severe liver infection. Sometime infected red blood cell becomes stickier than usual and clot easily, which can lead to stoppage of blood flow to the brain causing cerebral malaria. मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। एक खलिए वाला परजीवी अक्सर मुतासिरा मच्छरों के जरिए मुंतकिल होता है। ये मच्छर के थोक के जरिए इंसान के दौरान खून के निज़ाम में दाखिल किया जाता है। परजीवी खून के सुर्ख खलियों को उस वक्त तक मुतासिर करता है जब तक कि वो फट न जाएं। उसके बाद फटने वाले सुर्ख खून के खलियात से नया तैयार करदा प्लाज्मोडियम जिस्म के जरिए खून के मजीद सुर्ख खलियात को फैलाता और मुतासिर करता है। उस तरह तमाम खलियात हलाक हो जाते हैं। ये जगर में शदीद इन्फेक्शन का बाउस बन सकता है, जबकि मुतासिरा सुर्ख खून के खलिए मामूल से ज़्यादा चपक जाते हैं और आसानी से जमने लगते हैं, जो दिमाग में खून के बहाव को रोकने का बाउस बनते हैं, जिससे दिमागी मलेरिया होता है। Sign and symptoms. Malaria is recognized through high fever. The temperature may reach as high as 40 C, 140 F. Fever is accompanied by chills and may also include sweating. Patients may also suffer from constipation, kidney dysfunction and disorientation. मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। एक खलिए वाला परजीवी अक्सर मुतासिरा मच्छरों के जरिए मुंतकिल होता है। ये मच्छर के थोक के जरिए इंसान के दौरान खून के निज़ाम में दाखिल किया जाता है। मलेरिया को तेज़ बुखार के जरिए पचाना जाता है। दर्जा हरारत 40 सी, 140 F तक पहुंच सकता है। बुखार के साथ सर्दी लगती है और उसमें पसीना भी शामिल हो सकता है। मरीज कब्ज़, गर्दे की खराबी और बेहसी का भी शिकार हो सकते हैं। Dengue causes. There are 4 types of dengue viruses, all of which are spread by mosquitoes, and infected mosquitoes spread the virus through its saliva when it bites. Dengue can be transmitted from one human to another. For example, infected blood used in a blood transfusion can cause dengue. It can also be caused by organ donation and can even be transmitted from the mother to the children. When the virus enter the body, it circulates around the body attacking while blood cells and other antibodies has affecting the immune system. The virus further replicates within the cell until the cell burst and die. The death of the white blood cells result in leakage of other bullet from the cells, leading to low protein, fluid in the lungs and in the stomach area. Low blood pressure, shock and eventually death. डेंगू वायरस की 4 अक़साम हैं। ये सब मच्छरों से फैलते हैं और मुतासिरा मच्छर जब काटते हैं तो अपने थोक के जरिए वायरस फैलाते हैं। डेंगू एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकता है। मिसाल के तौर पर खून की मुंतकली में इस्तेमाल होने वाला मुतासिरा खून डेंगू का सबब बन सकता है। ये एज़ा अतिया करने से भी हो सकता है और मां से बच्चों में भी मुंतकिल हो सकता है। एक वायरस जिस्म में दाखिल होता है जो जिस्म के इर्द गिर्द गर्श करता है, हमला करता है, जबकि खून के खलियात और दीगर एंटीबॉडीज मदाफ़ती निज़ाम को मुतासिर करती हैं जब तक कि खलिए के अंदर मौजूद नकल के लिए वायरस सेल फट जाता है और खून के सफ़ेद खलियों की मौत हो जाती है, जिसके नतीजे में दीगर गोलियों के अखराज का नतीजा होता है। खलियात से कम प्रोटीन की तरफ जाता है। फेफड़ों में सियाल और पेट के इलाके में कम ब्लड प्रेशर, झटका और आखिरकार मौत। Sign and symptoms. High fever is followed by severe body pain. Pain behind the eyes and decreased urine output is also common. Dengue-related eye pain often increases with bright light. Patients may also feel respiratory difficulties and intense headache as the fever decreases and skin brushes may start to appear.
Another item is exclusive bleeding, as the virus attack the capillaries, the smallest blood vessels in the body. When the capillaries burst, blood escapes from the bloodstream. In several cases, bleeding is common in the nose and gums. The loss of blood can lead to decreased blood pressure and may eventually lead to internal bleeding, shock and death. तेज बुखार के बाद जिस्म में शदीद दर्द होता है। आंखों के पीछे दर्द और पेशाब की पैदावार में कमी भी आम है। डेंगू से मुतालिक आंख का दर्द अक्सर रोशनी के साथ बढ़ जाता है। मरीजों को सांस की दुश्वारी और शदीद सर दर्द भी महसूस हो सकता है क्योंकि बुखार कम हो जाता है और जल्द के ब्रश नजर आने लगते हैं। एक और चीज खसूसी खून बहना है। जैसा कि वायरस जिस्म की सबसे छोटी खून की नालियों कैपिलरियों पर हमला करता है, जब कैपिलरियां फट जाती हैं तो कई सूरतों में खून बहना खून से नकुल जाता है। नाक और मुंसोलों में खून बहना आम बात है। खून की कमी ब्लड प्रेशर में कमी का बाउस बन सकती है। आखिरकार अंदरूनी खून बहने, सदमे और मौत का बाउस बनता है। Chikungunya causes. This virus is also transmitted through mosquitoes that live and breed in stagnant or polluted water and infect humans with their bites. All throats. The disease is not contagious. It can spread from an infected person to another if the mosquito feed on the infected person first and then bite other people. The chikungunya virus is in fact the muscle cells of the body. It stays there and reproduces until the cell dies. It then finds a new host cell to infect. ये वायरस उन मच्छरों के जरिए भी फैलता है जो ठहरे हुए या आलूदा पानी में रहते हैं और अफजाइश करते हैं, और दरहकीकत इंसानों के काटने से ये बीमारी मुतअद्दी नहीं है। ये मुतासिरा शख्स से दूसरे में फैल सकती है अगर मच्छर पहले मुतासिरा शख्स पर पाँव डालें और फिर दूसरे लोगों को काटना। चिकनगुनिया वायरस दरहकीकत जिस्म के पट्टों के खलियात हैं। ये वह रहता है और सेल के मरने तक दोबारा पैदा होता है। उसके बाद इसे इन्फेक्शन के लिए एक नया मेजबान सेल मिल जाता है। Sign and symptoms. Chikungunya usually attack the muscles, joints, skin, connective tissues, and even the central nervous system. It is usually accompanied by fever and skin rashes. The conditions are almost identical to the dengue rashes. The patient may also suffer from headache, nausea, and vomiting because the virus destroys cells in the muscles and joints. Patients experience muscle weakness and joint pain, which can be severe. Partial loss of taste is also reported by many chikungunya patients. The disease is really fatal and the virus remains in the system for 5 to 7 days. Once one recovers from this infection, one is immune to it for the rest of one's life. चिकनगुनिया आमतौर पर पठों, जोड़ों, जल्द, मरबूत बाफतों और यहां तक कि मरकजी असाबी निज़ाम पर हमला करता है। ये आमतौर पर बुखार और जल्द पर खारिश के साथ होता है। हालात तकरीबन डेंगू रेश से मिलते जुलते हैं। मरीज को सर दर्द, मतली और क़े भी हो सकती है क्योंकि ये वायरस पठों और जोड़ों के खलियात को तबाह कर देता है। मरीजों को पठों की कमजोरी और जोड़ों का दर्द होता है जो शदीद हो सकता है। चिकनगुनिया के बहुत से मरीजों की तरफ से जायका का जज़वी नुकसान भी रिपोर्ट किया जाता है। ये बीमारी वाकई मुहलक है और वायरस 5 से 7 दिन तक सिस्टम में रहता है। एक बार जब कोई उस इन्फेक्शन से सेहत याब हो जाता है तो वो पूरी जिंदगी के लिए उससे महफूज रहता है। Similarities and differences in the signs and symptoms of the three disease. The chikungunya virus is transmitted by the same mosquitoes that spread the dengue virus. Chikungunya and dengue have almost identical symptoms and disease processes, so much so that one can be mistaken for the other to display joint pain. However, joint pain and inflammation caused by chikungunya are more intense and pronounced. On the other hand, no platelet counts, high bleeding risk and pain behind eyes are the main symptoms of dengue. The main symptom of malaria is chills, shivering, followed by fever, sweating. The symptoms usually occur every 2 days. चिकनगुनिया वायरस इन्हीं मच्छरों से फैलता है जो डेंगू वायरस फैलाते हैं। चिकनगुनिया और डेंगू की इलामात और बीमारी के अमल तकरीबन एक जैसे होते हैं। उस कदर के एक दूसरे को जोड़ों का दर्द जाहिर करने के लिए गलती से समझा जा सकता है। ताहम चिकनगुनिया की वजह से जोड़ों का दर्द और सूजिश ज्यादा शदीद और वाज़ह होती है। दूसरी तरफ प्लेटलेट का कोई शुमार नहीं होता। ज्यादा खून बहने का खतरा और आंखों के पीछे दर्द डेंगू की अहम इलामात हैं। मलेरिया की अहम अलामत सर्दी लगना, कांपना, उसके बाद बुखार, पसीना आना है। इलामात आम तौर पर हर 2 दिन बाद जाहिर होती हैं। Prevention. Since there are no vaccines or medical ways to prevent these diseases, here are a few useful suggestions for protecting oneself from these diseases. Wear clothes that will keep you fully covered. Use neat coverings. Live in hygienic surrounding. Ensure that there is no stagnant water, whether clean or dirty, in your locality, not even in and cover buckets, ports, cans, or any other things.
Apply good quality mosquito repellent lotion or in any one of the natural repellent products. Take extra precautions from dawn to dusk. Seek medical help as soon as possible. All this disease, that is, malaria, dengue and chikungunya, affect a person's health. They affect the quality of one work because it takes some time to recover from the weakness caused by them. Since they are all preventable and curable, it is important that we take all possible steps to protect ourselves and our family from this history. Moreover, we should seek immediate medical help if we observe symptoms of this disease, because the early here they are treated, the quicker is the recovery. चूंकि उन बीमारियों से बचने के लिए कोई वैक्सीन या तबी तरीके मौजूद नहीं हैं, उन बीमारियों से खुद को बचाने के लिए चंद मुफीद मशवरे ये हैं। ऐसे कपड़े पहनी जो आपको पूरी तरह ढांक कर रखें, साफ सुथरा ढांकनी इस्तेमाल करें। हिफाजत सेहत के माहौल में रहते हैं, उस बात को यकीनी बनाएं कि आपके इलाके में पानी का कोई ठहरा हवा मौसम साफ या गंदा नहीं है, हत्ता कि ढक्कन की बाल्टियों, बंदरगाहों, कैन या किसी दूसरी चीज में भी नहीं। अच्छी क्वालिटी का मच्छर भिगाने वाला लोशन या और कुदरती तौर पर भिगाने वाली मुसन्नुआत में से कोई एक लगाएं। फजर से शाम तक इजाफी एहतियात करें, जितनी जल्दी मुमकिन हो तभी मदद हासिल करें। ये तमाम बीमारियां यानी मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया इंसान की सेहत को मुतासिर करती हैं। वो एक काम के मयार को मुतासिर करते हैं क्योंकि उनकी वजह से होने वाली कमजोरी से सेहत याब होने में कुछ वक्त लगता है, क्योंकि ये सब काबिल इलाज हैं। ये ज़रूरी है कि हम अपने आप को और अपने ख़ानदान को उस तारीख से बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करें। मज़ीद ये कि हमें फौरी तौर पर काम करना चाहिए। अगर हम उस बीमारी की इलामात का मुशाहदा करते हैं तो तभी मदद हासिल की जाती है, क्योंकि यहाँ उनका जल्द इलाज किया जाता है तो जल्द सेहत याबी होती है।